So let me ask the team if anyone else is joining. हैरानी की बात होती है नहीं ऋषिता, लाइक बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन करते टाइम पे. इफ दे नो दैट देयर इज अ क्लास दे शुड ज्वाइन इन टाइम, राइट? व्हाट डू यू Yes. थिंक? क्यों नहीं ज्वाइन करते बच्चे? क्या लगता है आपको? So sometimes they forget. हाउ कैन यू फॉरगेट? हमको चाहिए जैसे डेली एक क्लास है ना? Yes, sir. एंड द क्लास इज ऑन सेम टाइम एवरी वीक, सेम टाइम सेम डे, है ना? एक फिक्स हो जाता है. Yeah. I mean, they should. It should be like by heart by now, because like you should know when the class starts. हाँ एग्जैक्टली, मतलब तो तब इतना हैबिट हो जाना चाहिए, बच्चे को पता होगी इस टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है. पता नहीं Yes, sir. कहाँ रहते हैं, किस ख्याल में रहते हैं, पता ही नहीं कब क्लास हो रही है नहीं हो रही है. चलिए, so we'll start with a question on the basis of collision theory. We have written in the conclusion of collision theory that there is two necessary conditions for effective collision, है ना? Effective collision will, or what is effective collision? Effective collision is a collision between the reactant molecule which will bring about a chemical reaction, है ना? But then the chemical reaction will happen. If there is effective collision, then surely there will be a chemical reaction happening. ठीक है, अब उसके बाद ध्यान सुनिए जरा. देखिए, the question is, you can write this with me. In some cases, अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन के देयर आर टू कंडीशन ही बताना भूल गया. प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट ऋषिता? यू हैव दिस इन योर नोटबुक. Proper Yes, sir. orientation and threshold energy, right? Okay, so in some cases the reaction is found to be slow even if large number of colliding molecules have energy higher than threshold energy. Why? There are generally some questions ना जिसमें अगर आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया तो फिर आपको नहीं आएगा, तो ऐसे उसमें से एक सवाल ये है. But in some cases the reaction is found to be slow even if large number of colliding molecules have energy higher than threshold energy. Now, a logical way of thinking about this particular question is there are two conditions for effective collision, है ना? One is threshold energy and the other is proper orientation. If the reaction is slow, then both of these criteria must not have been fulfilled or one of these criteria must not have been fulfilled. Now the question is already saying that large number of molecules, if large number of molecules have energy that is higher than threshold energy, so obviously speaking threshold energy criteria is already fulfilled. So which criteria would not have been fulfilled? The orientation criteria must not have been fulfilled. That is why the reaction would be slow. So the simple answer is due to improper orientation of colliding molecules. ठीक है, उसके बाद देयर इज वन एक टॉपिक छोटा सा है रिगार्डिंग कॉलिजन थ्योरी. रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी. आप टेस्ट दे रहे हैं क्या ऋषिता? Yes, sir. I started last week. अच्छा I mean ठीक है. this.
इस वीक आप कब दीजिएगा टेस्ट? व्हाट डे हैव यू चोजन? Saturday, sir. सैटरडे। रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलेजन थ्योरी, ठीक है ना? यहाँ से देंगे इधर इधर रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, the rate of reaction is equal to P ZAB, ठीक है, e to the power minus EA upon RT, minus EA upon RT, ठीक है. Here P is probability और steric factor. तो probability जो है ना, it ranges always ranges from 0 to 1 है ना. Probability either किसी चीज की 0 से लेके 1 तक कहीं पे भी रेंज करेगी, फाइन. Z is the frequency of collision. And EA, or EA like this, is activation energy. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे what are all of these things? Like what is probability or the steric factor is going to tell about? Its physical significance क्या probability और steric factor का? It tells about the percentage of molecules that are colliding with proper orientation. So let's suppose in a second 100 molecules are colliding with each other, but out of it only 50 molecules are what? Only 50 molecules are in proper orientation, so the probability will be 0.5. Now Z is the frequency of collision. So 100 is, है ना? तो अब अगर आपके पास probability अगर आपके पास क्या मान लीजिए 0.5 है, and how many collisions are happening? 100 collisions are happening. But how many of them is going to be, how many of these is going to be fruitful? So only 50. यहाँ से 50 आ जाएगा, fine. E to the power minus E upon RT, what is activation energy? हम लोग activation energy को पढ़ेंगे. तो ये दोनों आपको जानना जरूरी है. Probability will lie only from 0 to 1. That will give you an idea about how much of the frequency is effective. Like how much of them are having proper orientation. अगर 100 collision हो रहा है तो उसमें से कितने का proper orientation है? Let me know once you're done writing. So what are these terms? I hope you guys know. You know this, Rishita. R is what? Gas Rate of constant. reaction. ए नहीं Yes. भाई, gas constant. हाँ, not Yes. rate of reaction. And T is temperature. Okay. Yes, sir. Let me know once you're done writing. Done, sir. Activation energy. ठीक है. देखिएगा. It is the extra energy required for the reactant molecules to achieve the threshold energy. ठीक है. और समझिएगा जरा. What is this activation energy?
एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. Basically, if you have a graph like this, okay, and the reaction it proceeds like this. Let's suppose here we have the reactants and here we have the products. Now, obviously, if this is the case, then it is going to be what? It is going to be a what type of reaction? Exothermic reaction. Reactant का ज़्यादा है, product कम है जी. Now, let's suppose it is going like this. हाँ, बेकार है ये, ऐसे बनाना पड़ेगा. ठीक है. Now please see. ध्यान से सुनिए जरा, है ना. This is important, ठीक है ना रिश्ता. ध्यान सुनिए, देखिए. This is the average energy of the reactant molecules. यहाँ पर reactant है ना, सही है? Yes, sir. Make sense? ठीक है. Now, अब जो threshold energy, this is the threshold. यहाँ पे आके this is the threshold energy. This is the minimum energy that is required by the reactant molecule. इतनी एनर्जी वो अचीव कर ले, so this part, ये जो आपके पास यहाँ पे आएगा, this will be the threshold energy. तो obviously ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 10 आ गया मान लीजिए, राइट. ठीक है, let's suppose this is 10. But activation energy is the extra energy required by the reactant molecule. So activation energy बस यहाँ से यहाँ तक की होगी. This is the energy that is required by the reactant molecules to achieve the threshold energy. So this will be the E activation. इतना distance जो होगा ना, this will be E activation. Does this make sense? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. And the difference between the energy of reactant and product, it is known as delta H. I hope you know this. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? This energy this is delta H. ठीक है. उसी तरह से बिल्कुल we can do the same thing for. आप इसको ड्रॉ कर लीजिए जरा, है ना. ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया जाता है एंड यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोला जाता है कोऑर्डिनेट. ये जो आपके पास डिफरेंस है between reactant and product, this is delta H, enthalpy of reaction. Now, in this case, the reactant molecule will be requiring how much energy? So this is the energy that is going to be required by the reactant molecules. कितना? I hope यहाँ पे आपको दिख रहा है that here the activation energy is higher than the previous case. और ये पहला वाला जो केस था that was exothermic, this is endothermic reaction. Right? तो यहाँ पे आपके पास ये सेम चीज है, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट. राइट. अब यहाँ पे जरा दो तीन चीज देख लीजिए. फॉर एग्जांपल डेल्टा एच, तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल में क्या है? प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे भी वही होगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट.
mass energy of reactant. In this case, tell me delta H क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए बताइए, प्रोडक्ट की ज्यादा एनर्जी है रिएक्टेंट की, Reactant. है ना? So it will be negative. Yes, sir. In this case, the delta H will be positive. Right? Now this is exothermic. This is endothermic. ठीक है, यहाँ से हम लोग को एक चीज दिख गया that exothermic reactions, they have lower activation energy. आपको दिख रहा होगा ना, activation energy यहाँ पे छोटी सी है, and here it has a large activation energy, right? Endothermic reaction, they have large activation energy. इसका मतलब if the activation energy is high, then the reaction is going to be slow. If the activation energy is less, then the reaction will be faster. Let me know once you're done, Rashida. इसमें एक पॉइंट ना, ग्राफ से ना एक पॉइंट हमको बस लिखाना, एक और चीज है that see, when the like molecules in a particular system, they have the highest energy, and this is the highest energy that they can have, right? इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है. इसको एक्चुअली बाकी सब चीज Done, sir. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, when colliding particles possess energy, that is equal to activation energy, and activation energy तक अगर वहां तक पहुंचे, activation energy, then the atomic configuration is called transition state या activated complex. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल रिएक्शन ले H2 प्लस I2
gives 2 hydrogen iodide. So how the reaction is going to happen? First of all, okay, H2 will be having something like this type of structure HH, है ना? और आपके पास आयोडीन और आयोडीन कुछ इस तरह से बॉन्डेड होगा ना. I2 molecule will be bonded like this. Slowly they will come near by each other, है ना? तो आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से, आयोडीन and iodine will be very near to each other, right? They're near to each other. Now, because they have to form Hi, the hydrogen bond will be breaking. I'm writing this with red dots. Iodine bond will also be breaking, but it will not be completely broken. A iodine bond will be getting formed. Hydrogen iodine bond is getting formed. Now, this particular part, this is known as transition state or activated complex. है ना? इसी को क्या बोलते हैं? Transition state या activated complex, a complex or a group of atoms which has achieved the activation energy. अब उसके बाद क्या बन जाएगा आपके पास Hi और Hi will be formed. H bonded to I and H bonded to I. Does this make sense, Vishudha? Yes, sir. तो लिखिए. अब इसके बाद एक छोटा सा होमवर्क आपको देंगे हम. जनरली उससे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? आई मीन दिस इज द टॉपिक नेम इज, यू हैव टू रीड दिस फ्रॉम एनसीईआरटी. हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे इसके बारे में. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? यू हैव टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड मेक नोट्स. Now, whatever point you think that it is, like that point you have to write, you should write. आप उस point को लिख लीजिएगा. कर लेंगे इतना रिश्ता? Yes, sir. ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे. आर यू डन राइटिंग? I'm writing the homework, अच्छा the ठीक, names. हाँ लिखिए. जी जी जी. Done, sir. नेक्स्ट लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. इन दिस फैक्ट, आई मीन दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, हमने बहुत सारे फैक्टर्स देख चुके हैं ऑलरेडी. अब हम लोग आगे बढ़, मतलब वी हैव टू सी सम अदर फैक्टर्स नाउ, है ना? तो प्लीज राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction. Number one, concentration of reactant. When the concentration increases, the rate also increases, right? हम लोगों ने देखा नहीं तो, ये सुनो, ये Yes, sir. बताइए. ठीक है. दिस इज द पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी, है ना? नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में. व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड. Then we'll also study the effect of temperature. What happens when we increase the temperature? Fourthly, हल्का सा हम लोग को देखना है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है? दैट मींस, अच्छा इसमें डायरेक्टली हम लोग आंसर ना याद ही कर लेते हैं. दैट गैसियस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट, followed by reactions in the liquid state, followed by the reactions in the solid state. गैस वाले सबसे जल्दी जल्दी होंगे, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड. फिफ्थ में you can write in case of solid, then the surface area of solid is also a factor. That means if you have something powdered, it will have more surface area, right? Instead of bulk. Okay, so when you have more surface area, then the reaction is faster. Surface area of solid. Six, pressure of gas. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए. Then you will write
catalyst, regarding catalyst है ना, concentration तो हम लोगों ने देख लिया है. This is already we have done this one. Concentration of reactant, concentration increases, rate of reaction also increases. Let me know once you're done writing. Done, Rishita? Yes, sir. Right? Catalyst. देखिए, कैटलिस्ट वैसे आपको जो पढ़ना है ना, दैट इज ओनली द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. बट जो असल डेफिनेशन होती है कैटलिस्ट की, इट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और द नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों में चेंज कर सकता है. बट आपको याद रखना है, कैटलिस्ट क्या करेगा, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. ठीक है. कैटलिस्ट, व्हाट इज अ कैटलिस्ट? बाय डेफिनेशन, इट इज अ substance which increases rate of reaction without undergoing permanent change. Without undergoing permanent change, that means they do not change permanently. They do not change temporarily. Yeah, sure, they temporarily change. अब आराम से इसको थोड़ा समझ लीजिए ना. If you're writing, then you can stop writing and please understand. Let's suppose we have a reactant A and we have a reactant B. Both of these reactions, A is also stable, B is also stable, and we want to get AB. So if both A and B, both of these are stable, then what is going to happen? This complete reaction, अगर हम इस reaction की बात करें, then this will be obviously slow. ठीक है, this will be obviously slow. अब देखिए, इसमें अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तब क्या चेंज आएगा, ध्यान सुनिएगा ना, ध्यान सुनिएगा. We have A which is stable, we have B which is also stable, but we have now C which is a catalyst. And catalysts are also always reactive or unstable. They are very reactive. अब कैटलिस्ट क्या करते हैं ना, देख कैटलिस्ट इट ऑल्सो वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट, आप बीएनएस ब्लॉक में पढ़ेंगे. कैटलिस्ट कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इट कैन मेक 2 bonds, it can make 4 bonds, it can make 6 bonds. हाँ, इस तरह के कैटलिस्ट, इसी तरह के चीज को बोले जाता है. आई मीन दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन वर्क एज कैटलिस्ट. So what the catalyst does, it bonds with A. ये A के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और B के साथ भी बॉन्ड बना लेता है. ठीक है. Now you can understand why A and B are forming bond with C, because C is react. A का उसमें कोई हाथ नहीं. ठीक है. ए का कोई हाथ नहीं. ए भी इंट्रोवर्ट, बी भी इंट्रोवर्ट, बट उसके साथ एक एक दोस्त ऐसा आ जाए जो बहुत एक्सट्रोवर्ट, तो उनको सारी पार्टियों में ले जाएगा, सारे फंक्शन अटेंड करवाएगा. मेक सेंस ऐसा ना रिश्ता? Yes, sir. हाँ ना, तो ऐसा ही कुछ है. दैट व्हाट द कैटलिस्ट डज इज इट मेक्स बॉन्ड विद ए एंड बी. नाउ अगर ए और बी, सुनिए जरा, नाउ इफ ए एंड बी हैव बॉन्डेड विद कैटलिस्ट, दैट मींस देयर बॉन्डिंग हैज चेंज्ड. यस और नो रिश्ता? उनकी बॉन्डिंग अब चेंज हो गई है. वॉट एवर Yes. बॉन्ड ए वाज मेकिंग, इट इज नाउ. Now, as soon as the bonding changes, the reactiveness also changes. पहली चीज तो, they were stable, they will be less stable right now. And one very important thing that happens here is A and B are quite closer right now. So A and B, now what can happen? Now since they are closer to each other, they can react with each other like this. They can react with each other like this. और उसके बाद A and B will form the bond और C वैसे ही का वैसे ही निकल जाएगा. तो C ऐसा नहीं है, इट इज नॉट चेंजिंग.
There are multiple, you can see people saying that catalyst is a substance which increases the rate of reaction uh, without participating in the reaction. सुना है आपने अभी या नहीं सुना अभी तक? काइनेटिक्स हुआ है आपके स्कूल में? Yes, sir. तो मेन जो जनरल नोशन ऐसे आता है ना, जनरली नोशन ऐसा आता है, कैटलिस्ट क्या होता है? वो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? लाइक लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है ना कि कोई चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो हाउ इट इज गोइंग टू चेंज एनीथिंग अबाउट द रिएक्शन? तो कैटलिस्ट डज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट इट डज नॉट अंडरगो एनी परमानेंट चेंज। टेम्परली हाँ उसमें चेंजेस आते हैं, बट एट द एंड इट डज नॉट चेंज। डज दिस मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर आप देखें, देन द फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट। मेक सेंस? द Yes, फर्स्ट sir. रिएक्शन में रिएक्टेंट भी अलग है, ठीक है? तो कैटलिस्ट व्हाट डज इट डू? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय गिविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। रिएक्शन का पाथवे को, रिएक्शन के मैकेनिज्म को ही चेंज कर दे रहा है, हाँ है ना? हाँ, sir. है ना? ठीक है, तो यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज द कैटलिस्ट वर्क? Catalyst provides a different reaction pathway with lower activation energy. ठीक है? Therefore rate increases. Just give me a second, I want to make a particular graph. एक मिनट से हमको इमेज बस डाउनलोड करनी है। No, 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 no. अरे आ जाओ यार। हाँ, ठीक है, you can see that there are two plots, gray one and the orange one. So gray is without catalyst. So without your catalyst, you can see how much large energy is required because both of the reactant molecules will be stable. तो उसको heat करो, pressure डालो, तब जाके they will react with each other. But when we add catalyst, the activation energy becomes lower. ठीक है? And that is why this is the way. This is, I mean, you can see the reactant and the product, they are the same thing. लेकिन path change हो रहा है। Make sense? ये सुनो निश्चिता। Yes, sir. चलिए ठीक है, इसमें आपको जो कॉपी करना कॉपी कर लीजिए। We will go on. जी टेल मी।
Done. No, sir. One second. Okay, no problem. Yeah. Done, sir. Done. ठीक है. Next is the effect of temperature. बीच का मिडिल पाथ कुछ नहीं है यहाँ पे, सीधा इतना मोटा हो जाता है कुछ नहीं. Effect of temperature. Now this topic is also as Arrhenius equation. Arrhenius equation. ठीक है. Now Arrhenius equation, what does it do? Arrhenius equation नहीं पढ़ेंगे. Gives the relationship between, gives कौन, लेकिन Arrhenius equation gives relationship between temperature and rate constant. Temperature and rate constant. So Arrhenius, he did a lot of reactions, and this particular formula, he has derived this particular formula by like the empirical evidences. Like उन्होंने reaction किया, temperature देखा, फिर rate constant measure किया, temperature देखा, फिर rate constant, temperature देखा, फिर. So by this type of reactions, by doing multiple reactions, he arrived at this particular formula that K, it is equal to A, which is a constant, e to the power minus EA upon RT. It is very similar to the collision theory वाला equation. ठीक है. Now अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं what is the effect of temperature, what will happen to the rate of reaction. Now whatever happens to the rate constant, that will happen to the rate of reaction, because the rate of reaction is K into the concentration of A, right? For any of the reaction, K into the concentration of reaction. So if the K is high, rate of reaction will be high. If the K is low, the rate of reaction will be low. Does this make sense, Rishita? Yes, sir. ठीक है. चलिए देखिए, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, if I'm going to increase the temperature, then the denominator will increase and the fraction will decrease. This whole fraction is going to decrease. Make sense? Yes, sir. Okay. Now, if the fraction decreases, then what is going to happen? The negative, this fraction is low, है ना? तो अगर fraction, ये fraction छोटा है, then I can say that the negative exponent is higher. For example, -2 और -3 में कौन बड़ा है? तो -2 वाला बड़ा है ना? Fraction तो ये छोटा आ गया, but the negative exponent will be higher. Make sense now? Yes, sir. ठीक है. So negative exponent is higher. नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट हाई है, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट इज हाई है, देन व्हाट आई कैन से, ई की वैल्यू भी ज्यादा है. जैसे ई टू दी पावर -2 बड़ा होगा या ई टू दी पावर -3 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ई टू दी पावर -2 बड़ा होगा ना. मेक सेंस? दिस Yes, विल बी sir. ग्रेटर. ठीक है. ई इज हायर. इफ द ई इज हायर, देन दिस होल थिंग इज हायर. इफ ई इज हायर, देन आई कैन से दैट k is directly proportional to e, so k is also higher, and that is why the rate will also be higher. Does this make sense? Let me know. एक बार देख लीजिए, रीड दिस पार्ट.
Make sense? Yes, sir. देख लीजिए एक बार. ठीक है. After this, you can write a few points. What is A? This is the rate constant. What is A? The Arrhenius equation. Not Arrhenius equation. Arrhenius constant. Or it is also known as free exponential constant. Free exponential constant. E is temperature. EA is activation energy. R is the universal gas constant or gas constant. Gas constant. इसकी वैल्यू हम लोग को लेना है 8.314 जूल्स per Kelvin per mole. What is E? The value of E is 2.718. ठीक है. There are some very tough looking questions which are easy, which comes from this particular topic. है ना, ये टॉपिक जनरली ना बच्चों को डरा देता है. ये तो ओ माय गॉड व्हाट इज ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, बाप रे बाप, फ्रैक्शन में इतना ज्यादा कैलकुलेशन होगा. बट देयर आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन फ्रॉम दिस फार्मूला एग्जैक्टली. एक दो सवाल करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डू मोर थिंग्स लाइक अगर T1 से T2 टेंपरेचर में जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा एंड सो ऑन. लेट मी नो वंस यू आर डन. लेट मी नो वंस यू आर डन. Done, sir. देखिए, अच्छा ये फॉर्मूला जो है ना, K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस E अपॉन आर टी, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है ना, बिकॉज डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से आता है. So you can write a question like this. The rate constant for first order. The rate constant for first order. Rate constant for first order decomposition of N2O5 is given by the following equation. K is equal to 2.5 into 10 to the power 14 second inverse into e to the power minus 25000 K. ठीक है, this whole thing divided by T. Fine. तो पूरी चीज दी हुई है, कैलकुलेट. Activation energy for this reaction and rate constant
if its half-life period, if its half-life period is 300 मिनट्स। ठीक है, एक तो तुरंत आ जाना चाहिए आपको। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, एंड हाफ लाइफ दिया हुआ है 300 मिनट्स। ठीक है, तो टी हाफ इट इज इक्वल टू 300 मिनट्स। अब बताइए के विल बी इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताइए रिशिता, फ्रैक्शन में ही बता दीजिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर के इफ टी हाफ इज गिवन। Uh, याद नहीं हुआ है अभी तक, बोलिए। T K equals to 0.693 by T half. वेरी गुड, 0.693 Six डिवाइडेड बाई T half. 300, है ना। So this Yeah, will be yeah. approximately equal to what? Uh, two, two, 30, no, 2.3. 23. हाँ, 2.3 into 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स, आई थिंक आंसर विल बी हो जाएगा ना। Yes, sir. ऊपर 10 हाँ ठीक है, 2.3 राइट। ये तो आ गया है ना। अनदर आस्किंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस इक्वेशन, जो के होता है दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और यहाँ पे भी के की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे भी के की वैल्यू दी हुई है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन। So you can see Yes, that sir. this part is the A part, है ना। ये जो 2.5 वाला पार्ट है, दिस इज A part, है ना। E की जगह E है, एंड वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार्ट में यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन आर टी है, विच विल बी इक्वल टू माइनस 25,000 केल्विन, दैट इज केल्विन एंड टेम्परेचर केल्विन, डिवाइड बाई टी। अगर आप यहाँ पे देखें, द टी एंड द टी कैन कैंसिल ईच अदर, है ना, और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। मेक सेंस, ये सुनो। Yes, sir. EA will be equal to 25,000 केल्विन वाला के है इंटू आर इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। वंस यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट द आंसर एज, मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे ना होपफुली, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यू विल गेट द आंसर एज 207850 केल्विन, एंड केल्विन इनवर्स विल कैंसिल ईच अदर, जूल्स पर मोल। You can add this as 207.85 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब ये कि आई होप द क्वेश्चन वाज कंसेप्चुअली आसान ही था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, है ना। कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी यहाँ पे, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 25 इंटू 8.314। लेकिन अगर आप ये सवाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, इफ यू डोंट रिवाइज दिस क्वेश्चन, तब फिर आपके पास दिक्कत होगी, यू विल नॉट रिमेंबर हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉपी डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन।
Done, sir. अब आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में एक दो रिमार्क कर दीजिएगा. First point, the A part, that is the free exponential factor, and the activation energy are characteristics of a reaction. Are characteristics of a reaction. That means they would change if the reaction changes. ठीक है, अगर reaction change होगा तो वो भी change हो जाएंगे. Fine. Meaning, और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे? दे आर ओनली गोइंग टू डिपेंड ऑन द रिएक्शन. वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन, बाकी किसी चीज से डिपेंड नहीं करेंगे. वो बस किससे डिपेंड करेंगे? ऑन द रिएक्शन इटसेल्फ, है ना. मीनिंग, देखिएगा मीनिंग, दीज आर not affected by temperature. Next point, A gives an idea about number of effective collagen per unit time. तो ए जो है ना, वो मिश्रण है दोनों चीज का, पी एंड जेड ऑफ द कोलेजन थ्योरी में. जो पी और जेड है, उन दोनों को मिला के ए आर्गेनिक फैक्टर. नेक्स्ट इज ग्राफ फॉर आर्गेनियस इक्वेशन. तो ग्राफ के लिए वी नीड एक्चुअली इक्वेशन, है ना. वी नो वंस यू डन. हो गया. हाँ सर. ठीक. So we have right now an equation. first अब derivation है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा जरा. Try to understand each and every step, फिर हो जाएगा. A, that is equal to A into e to the power minus EA upon RT. ठीक है. If I take ln, that is natural log on both sides, take ln, है ना, on both sides, then it will be ln k, which will be equal to ln A into e to the power minus EA upon RT. ठीक है, ध्यान सुनिएगा. Now ln k will be equal to ln A plus ln e to the power minus EA upon RT. Does this make sense? Yes or no? यहाँ तक आ रहा है? Yes sir. My bad. This EA upon RT will come down ln k
will be equal to ln A minus EA upon RT ln E. ln E तो 1 हो जाएगा, मेक सेंस ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, now we have an equation that ln K is equal to ln A minus EA upon RT। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। R is a constant, activation energy is only going to belong to the reaction, reaction take होगा, A is also constant, T is going to change and with respect to T the K is also going to change। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे ग्राफ आ सकता है। और वी कैन आल्सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट द ln टू log। तो log में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आई विल मल्टीप्लाई 2.303 log k will be equal to 2.303 log a। now minus EA upon RT will be minus EA upon RT, वहां तो हम लोग कोई चेंज नहीं करना है, EA upon RT। now what we can do is we can divide by 2.303 overall, तो ये हो जाएगा log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT, ठीक है। मेक सेंस इसमें प्लीज सही, Yes, sir. राइट। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए जरा, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द ग्राफ्स।
हो गया रशिता? हाँ सर, डन। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो दीज आर द टू इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज इन ऑर्डर टू मेक द ग्राफ, है ना। ये दोनों हम लोग को इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। फॉर बोथ द इक्वेशन ना ग्राफ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनता है, वाई देखिए ध्यान से। बोथ ऑफ दीज इक्वेशन आर इन द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप जानते हैं ना, ये सुनो। यस सर। y is equal to mx plus c is going to have a slope intercept लो। form, है ना। ठीक है, या। फाइन। तो देखिए y एक्सिस में आपको क्या रखा है k, so this will be log k will be the y, ना। एक ग्राफ में log k आपके पास y हो जाएगा, और उस वाले ग्राफ में ln k को y एक्सिस में रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास log a जो है, अच्छा x क्या होगा, x will be 1 upon t, है ना। x क्या हो जाएगा, दिस 1 upon t है ना, 1 upon t जो ऐसे करके, दिस 1 upon t is going to be x here also, 1 upon t is going to be x here also, मेक यस सेंस, सर। ये सुनो। ठीक है। और उसके बाद वट एवर इज विथ एक्स इज नोन एज वॉट, इट इज नोन एज एम। ये वाला पार्ट एम एक्स बता रहा है, दिस विल बी सी, दिस विल बी सी, और ये वाला पार्ट एम हो जाएगा, राइट। एम एक्स विल बी दिस पार्ट। नाउ यू कैन सी दैट द स्लोप इज नेगेटिव, ये सुनो। स्लोप नेगेटिव दिख रहा है आपको, हाँ सर। हाँ या ना। एंड व्हाट अबाउट द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। व्हाट इज द इंटरसेप्ट, वाई एम एक्स एम, ओ पॉजिटिव। है ना। ठीक है, यस सर। ध्यान से, लॉग के या फिर एल एल के, है ना, एनीथिंग कैन बी। एंड यहाँ पे तो इन बोथ ऑफ द केसेस इट विल बी 1 अपॉन टी, राइट। अब ग्राफ, ग्राफ की अगर हम बात करें, so you can make the graph like this, positive intercept and negative slope। अब जो स्लोप है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज ऑन द वाई एक्सिस, अगर लॉग है तो जो स्लोप होगा इट विल बी माइनस ई अपॉन 2.303 आर, है ना। और अगर आपने स्लोप को क्या लिया, सॉरी, अगर आपने एल एन के वाला ग्राफ बनाया है, इफ दिस ऑन एल एन के देन इट विल बी माइनस ई अपॉन आर, 2.303 वाला टर्म नहीं होगा। Similar is the case for the intercept. This intercept could be log a if the graph is in terms of log k, and it will be ln a if the graph is in the form of ln, if it is in the form of ln k. Make sense, Yusunu? यस सर। Copy this down. ग्राफ से भी सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ सर। Raise your hand if you're done. Let me know once you're done. डन सर।
वैसे पढ़ाई में मन लग रहा है ना आपका ऋषिता? हाँ सर। हाँ। बीच में आप बिल्कुल ही हो गए थे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम में, याद है आपको? यस सर। अब ठीक है ना? यस सर, आई एम फाइन। तो कहीं घूमने जाने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं सर। तो कहीं गए थे आप? नहीं, मुझे और आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर ईदर नाउ। अच्छा, अभी आपको कहीं जाना नहीं है? हाँ सर। अच्छा, हु इज टेकिंग योर जेई क्लासेस नाउ? जिशान सर। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सर। आर इन सिचुएशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है? तो देखिएगा, ऑन एवरी, अच्छा एक दिस वन थिंग दैट आई एम राइटिंग, ये आपको ऐसे अगर डायरेक्ट सवाल आ जाए, इसको न्यूमेरिकल्स में कभी यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना? ऑन एवरी 10 डिग्री इंक्रीज, 10 डिग्री और 10 केल्विन increase or rise in temperature, the rate of reaction or rate constant doubles, ठीक है? दिस इज अगेन एम्पेरिकल एविडेंस से ये देखा गया, जनरली स्पीकिंग ना, दिस इज यू हैव नॉट डोंट हैव टू यूज दिस इन न्यूमेरिकल्स एट ऑल। कभी भी इसको न्यूमेरिकल्स में आप यूज नहीं कीजिएगा डायरेक्टली, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए तो डबल्स याद रखिएगा, डबल्स होता है। हाँ, तुक्का मारने में आपको काम आ जाएगा, अगर आपको तुक्का मारना है तो उसमें से डबल कर दीजिएगा, ठीक है? बट if there are two temperatures given, then how are we going to calculate the, what's going to be the change in the rate constant, है ना? तो at T1 and T2, T1 and T2, these are the two different temperatures। इसके लिए अगर हम RNA equation लिखें, तो for T1 I can write log K1, which is equal to log A minus EA upon 2.303 R T1, ठीक है? सिमिलरली log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 R T2। So at two different temperatures, these are the RNA equation 1 and 2. A and activation energies are not changing because they are only dependent on the reaction. They are not dependent on the temperature. Temperature change से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, right? So we can write log K2 minus K1, log, अच्छा 1 minus 2 कर रहे हैं ना, equation 1 minus equation 2, log K2 minus log K1 will be equal to this first part of log A, नहीं second part है ना, हाँ ठीक है, log A minus EA upon 2.303 R T2, ठीक है? दिस होल थिंग माइनस log A minus EA upon 2.303 R T1। Just give me a second। देखो, log A minus log B, I can write this as log A upon B will be equal to log A minus A upon 2.303 R T2 minus log A, minus and minus will be plus now, EA upon 2.303 R T1, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो log A यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे log A नेगेटिव में, so I can cancel these two log में, and the equation will become now
log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T1 minus EA upon 2.303 R T2. अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, that log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R को हमने ले लिया कॉमन, and now it will become 1 upon T1 minus 1 upon T2. Now LCM लेके अगर I can solve this once again, this log K2 upon K1 will be equal to EA upon, अच्छा 2.303 in multiplied by 8.314 अगर हम कर दें, this will be equal to 19.14 है. If you remember 19.14, it will be easier for you to solve. T2 minus T1 कर देंगे यहाँ पे, T2 minus T1 divided by T1 T2. ना, I hope you can understand the mathematics. आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. इसको प्लीज जरा you can see each step. अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही होगी then please let me know. Let me know once you're done, Rishita. Done, sir. ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, दिस चैप्टर इज डन. एक दो न्यूमेरिकल बस हम कल नेक्स्ट क्लास में करा देंगे. व्हाट चैप्टर शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट? So coordination compounds or solutions. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर सॉल्यूशन. आपका टेस्ट है ना अभी, कुछ तो आप बता रहे थे, शायद टेस्ट है आपका कुछ अभी. हाँ वो केमिकल काइनेटिक्स है. अच्छा केमिकल काइनेटिक्स ही है. तो एक काम The करते हैं, one on Saturday. इट्स ऑन सैटरडे. So the Learnivio one, right? नहीं नहीं नहीं, स्कूल का हम पूछ रहे हैं. No, sir. We don't have any tests on Zoom. अच्छा स्कूल में भी कोई टेस्ट नहीं चल रहा है. और ओके फाइन, इफ यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंस तो फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, है ना. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू
do a few numericals on this particular topic of Arrhenius equation and Prescott solution. Fine. Yes, sir. Sure.